Mutual funds are subject to market risk. Read all scheme-related documents carefully. We all must have heard this line and must have thought of investing in mutual funds. But maybe because we do not have much knowledge about mutual funds, हमने अपने mutual funds में invest करने के decision से back out कर लिया है. So in this video, we'll try to get a better understanding about mutual funds. So let's get started. As we plan to invest our money, what are the options available? सबसे पहले जो हमारे माइंड में क्लिक करता है, that is FD. But FD gives such low returns in a long tenure. Next, what we think about is real estate. Obviously, real estate is a good option, but as a beginner, इतना सारा पैसा किसके पास है? So what else? Next option what we think about is gold. But who wants to own gold these days? As investing in gold will not give you much expected return. So one better option available is mutual funds. Yes, mutual funds, which will give better return than FD. And obviously, it is your choice how much to invest and for how long. But how does it work and what it is? So basically, what mutual fund is? Mutual funds are funds managed by mutual fund companies. What mutual fund companies do is they collect money from people like you and me. आपकी और मेरी तरह काफी सारे लोग म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाते हैं एंड म्यूचुअल फंड कंपनीज कलेक्ट दिस मनी एंड क्रिएट अ पूल फंड and this pooled fund is used by mutual fund companies in different investing options. तो हम अपना पैसा खुद क्यों नहीं इन्वेस्ट करते? बिकॉज म्यूचुअल फंड कंपनीज के पास एक्सपर्ट फंड मैनेजर्स होते हैं जो कि एक प्रॉपर रिसर्च एंड एनालिसिस के बाद हमारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं टू गेट द बेस्ट रिटर्न्स. हमारा पैसा स्टॉक मार्केट में लगाया जाता है, डिफरेंट बिजनेस प्रोजेक्ट्स में लगाया जाता है, सिक्योर्ड गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लगाया जाता है जिससे कि एक बैलेंस्ड रिटर्न निकल कर आए. So अगर हम खुद इन्वेस्ट करेंगे तो मे बी बिकॉज वी डू नॉट हैव सो मच ऑफ टाइम एंड वी डू नॉट हैव दैट प्रॉपर नॉलेज, हमारा पैसा स्टेक पे हो एंड इट कैन गो इनटू अ लॉस. सो हम अपना पैसा म्यूचुअल फंड कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं सो दैट एक प्रॉपर बैलेंस्ड पोर्टफोलियो में हमारा पैसा इन्वेस्ट, बिकॉज म्यूचुअल फंड मैनेजर्स invest in any scheme only after doing proper research and analysis. So we get the best return that is possible. So now, as you have seen, it is probably safe to invest in mutual funds. So the question is, from where to buy the mutual funds? क्या इसके लिए डीमैट अकाउंट ओपन कराना मैंडेटरी है? So the answer is no. म्यूचुअल फंड्स के लिए डीमैट अकाउंट खुलवाना मैंडेटरी नहीं है. डीमैट अकाउंट से तो आप म्यूचुअल फंड्स बाय कर ही सकते हैं. इसके अलावा आप और भी ऑप्शन से म्यूचुअल फंड्स बाय कर सकते हैं विदाउट ओपनिंग एनी डीमैट अकाउंट. What are these options? So आप किसी भी ट्रस्टेड बैंक में जाके उस पर्टिकुलर बैंक की म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं by directly going to the bank and asking for the different mutual fund schemes going on. इसके अलावा in present time there are other options available also through which in no time you can open your investing account in which you can invest in mutual funds and stocks and all through some service providers like ET Money and Groww app. So these apps provide platform from where you can invest in stock market and mutual funds. The only thing that you have to do is you need to register on their website or their particular app. So what you have to do is download your app from App Store. I am downloading here groww app. And next what you have to do is just fill in your details and register yourself on the app. Then you can see this dashboard. Here you can see various investing options like stocks, mutual funds, gold. We will focus on mutual funds here. यहाँ पे आप मोस्ट पॉपुलर फंड्स देख सकते हैं जो भी ट्रेंड में चल रहे होंगे. प्लस नीचे आप देख सकते हैं कलेक्शंस जिसमें कि कैटेगराइज किया गया है कि हाई रिटर्न्स म्यूचुअल फंड्स कौन से हैं एंड टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स कौन से हैं एंड अदर ऑप्शंस लाइक बेटर देन FD, टॉप कंपनीज, SIP विद I100 एंड सो ऑन. इसके अलावा आप काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स यहाँ पे देख सकते हैं जिसमें आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट हम यहाँ पे पॉपुलर फंड्स में से एक चूज़ करेंगे जैसे कि पारंपरिक फ्लैक्सी कैप as it is showing highest returns.
वील ट्राई दिस आउट। इसमें आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड्स की क्या एनएवी है, पिछले सालों में उसका क्या रिटर्न पैटर्न है, कैसे उसने रिटर्न्स प्रोवाइड करे हैं, उसकी रेटिंग क्या है। जैसे कि यहाँ पे इसको 5 रेटिंग मिली हुई है, प्लस उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड्स के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, क्या क्या उसके एडवांटेजेस एंड क्या क्या उसके डिसएडवांटेजेस रहे हैं। एंड आप यहाँ पे एसआईपी या फिर वन टाइम पेमेंट के थ्रू आपकी क्या रिटर्न कैलकुलेट होके आती है। लाइक आपने 1 ईयर बैक अगर इसमें एसआईपी के थ्रू 1000 इन्वेस्ट किया होता तो आपको आज 15,220 की रिटर्न आती। एंड इफ़ यू हैव इन्वेस्टेड 1000 वन टाइम 1 ईयर बैक देन आपको 1600 समथिंग आज मिल जाते। सो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप नीचे और भी काफ़ी सारी डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं, जैसे कि एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड एंड अदर टैक्स इम्प्लीकेशंस ऑफ दैट पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड्स। एंड तब आप अपना डिसीजन लीजिए कि आपको उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है या नहीं। इसके अलावा अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि पेमेंट कैसे करते हैं, आप किसी भी म्यूचुअल फंड को कैसे बाय करते हैं। सो हियर आई एम चूजिंग द एसआईपी मेथड। आप इसमें अपना इंस्टॉलमेंट अमाउंट मेंशन करिए, लाइक आई हैव मेंशन 500, बट क्योंकि इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में लिमिट है कि आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 की कर सकते हैं, तो हमें 1000 की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। सो वील ट्राई 1000 हेयर। आप यहाँ अपना अमाउंट फिल इन कीजिए एंड देन अपने इंस्टॉलमेंट की डेट सेलेक्ट करिए, जो कि आप कोई भी अपनी मर्ज़ी से डेट सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हैं अपनी इंस्टॉलमेंट को पे करने में। Click on invest now button. Now you can see the payment options like Google Pay, net banking. You can choose your payment option and it will process the payment. After making the payment successfully, the amount will be reflected in your mutual fund account, and after processing the order it will be reflected in your mutual fund account that you have invested so and so amount in that particular mutual fund. It is as easy as that. Although these apps provide a detailed description about each and every scheme that they show on their platform, but it is always beneficial to do a proper research and analysis, and it is wise to consult some advisor who can guide you on this before investing your money in any of the particular scheme. Now that you have chosen where to invest, We will now see how to invest the money in mutual funds. so there are two ways of investing in mutual funds. One is lump sum method, in which आप इकट्ठा पैसा एक lump sum amount एक साथ invest करते हैं, be it 50,000 or 1 lakh, whatever you choose. Another method is SIP. SIP, that is systematic investment plan, जिसमें आपको एक disciplined investment करना होता है, where you invest regularly at monthly intervals, and this amount of investment can be as low as 500 rupees per month, or it can be 1000, 2000, or any maximum amount that you are comfortable with. This is all about how to invest in mutual funds. But the question is, how many types of mutual funds are there, and what is the subject to market risk? So talking about the types of mutual funds, there are three types of mutual funds, in which the first one is equity oriented mutual funds, जिसमें भी हमारी तीन कैटेगरी होती हैं. First one is large cap mutual funds, second mid cap mutual funds, third small cap mutual funds. So basically what are these? So हम large cap से समझते हैं. So large cap companies are highly reputed companies with a larger market capitalization. And similarly, there are mid cap and small cap companies. So basically, what is equity oriented mutual funds? Equity oriented mutual funds provide highest returns out of all, but they come up with high risk also. Next is debt-oriented funds, which provides comparatively lower returns than equity-oriented funds and are less risky than equity-oriented funds, but their returns are comparatively higher than the FD returns. And the third one and the last one is hybrid mutual funds. As the name suggests, it is a combination of equity and debt-oriented funds, in which some portion of our money is invested in equity portion and some of the money is invested in debt portion, so that we can get a balanced return out of the portfolio. So the return of hybrid mutual funds somewhere lies between the return of equity oriented mutual funds
and debt oriented mutual funds. इसके अलावा कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम्स क्लोज एंडेड होती हैं एंड कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम्स ओपन एंडेड होती हैं. सो व्हाट इज दिस क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स? क्लोज एंडेड का मतलब है कि जब म्यूचुअल फंड कंपनी अपनी स्कीम लेके आएगी तो उस स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट में ये मेंशन होगा कि ये स्कीम इस डेट से ओपन है एंड इस डेट को क्लोज होगी, दैट इज इस डेट को ये म्यूचुअल फंड्स मैच्योर होंगे. एंड ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड आपका पैसा उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए लॉक इन हो जाएगा एंड यू कैन नॉट विथड्रॉ योर मनी ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम. Such type of mutual funds are close-ended mutual funds. Whereas in open-ended mutual funds, you are free to enter or exit into that scheme. आप कभी भी उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड कभी भी अपना पैसा उस स्कीम से विड्रॉ कर सकते हैं. So entry and exit is not restricted in open-ended mutual funds, whereas it is restricted in close-ended mutual funds. तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है कि आप कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, whether it is equity oriented, it is debt oriented, or it is hybrid one, because your returns and your risk will be dependent on that. And again, you have to be careful while choosing mutual fund that your mutual funds are open-ended or close-ended, depending upon the requirement of your investment. So by understanding so much about mutual fund, one more thing that we need to consider is, क्या म्यूचुअल फंड कंपनीज हमारा पैसा फ्री में हमें ग्रो करके देंगी? And for all this hassle, do they charge anything from us? Obviously, they charge a little percentage of fees from us, जिसको हम expense ratio बोलते हैं, which lies somewhere around 0.5% to 3% depending upon the conditions of the scheme. So before investing in any scheme, do read the scheme related documents carefully and then only invest in that particular scheme after the proper analysis of the scheme. That is, whether the scheme is close-ended, it is open-ended, what is the expense ratio, what are the other conditions, will they be investing in equity only, will be they investing in debt only, what are the objectives of mutual funds basically. So after all this, last में जो हमारा बचता है that is taxability. तो क्या म्यूचुअल फंड्स टैक्सेबल होते हैं? क्या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से हमें कोई टैक्स बेनिफिट मिलता है? So yes, म्यूचुअल फंड्स में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं and if they are equity oriented mutual funds, then हमें 80C में इसका बेनिफिट मिलता है. We can claim deduction of equity oriented mutual funds under section 80C, जहां पर हम 1,50,000 तक की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं थ्रू म्यूचुअल फंड ऑल्सो, together with other investment options that are available under section 80C. That is, सारे investment options मिला के आप total 1,50,000 की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में 1,50,000 की कर सकते हैं, टोटल मिला के और भी अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो 80C में दे रखी है, जैसे कि PF, 5 ईयर FD एंड सो ऑन, ऐसे ही उसी में 1,50,000 में म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ पैसा भी इंक्लूड हो सकता है. So the total deduction that we can claim in 80C is 1,50,000. And what about the taxability? So the mutual funds are also taxable when they get mature. That is, amount of money that we invest in mutual funds, when it gets mature, it is also taxable. So the mutual funds are subject to capital gain tax, but it depends कि आपका mutual fund equity oriented है या debt oriented है या कैसा fund है, एंड कितने टाइम पीरियड के लिए आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है, whether it is short term or it is long term. Your taxability depends upon that. So the tax rate depends upon your holding period. It somewhere lies between 10 to 20% depending upon the case. So it is all about the taxability of mutual funds. So in this video, I have covered the basics of mutual funds, which I consider कि mutual fund में invest करने से पहले हमें इतनी चीजें पता होनी चाहिए, so that we can make a wise decision. I hope this video will help you get a better grip on mutual funds. So do like, comment and share this video if it is helpful to you. And thank you so much for watching. Bye.